Good evening to everyone. Welcome back to our GAUSSIAN tutorial. So basically आज हमें क्लासिकल मेकानिक्स रो हमें लेक्चर 3 पढ़िबा जोदरे के हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़िबा गोटे छोट प्रॉब्लम करबा. ओके, सो नेक्स्ट क्लास रे मु स्टार्ट करबी रिजिड बॉडी डायनामिक्स. ओके, तो केमते हमें रोटेशनल मोशन बेसिकली हमें स्टडी करबा. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर टॉर्क आउ हला करो होची एंगुलर वेलोसिटी. बेसिकली हमें जेमती लिनियर मोशन पे हम कोन दरकार मास दरकार. ओके, जेमती एंगुलर मोशन पे हमको दरकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जेमती लिनियर वेलोसिटी सेमती एंगुलर वेलोसिटी, जेमती लिनियर फोर्स सेमती एंगुलर फोर्स, जेमती लिनियर वेलोसिटी सेमती एंगुलर वेलोसिटी. ओके, एंगुलर फोर्स को हमें टॉर्क बोल भी कहउछ. ओके, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करबा कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम. सो राइट डाउन conservation theorem for angular momentum. ओके, तो देखो फर्स्ट हमें गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम बा रेफरेंस नबा. ओके, ओ ओरिजिन. ओके, देन हमरो सेंटर ऑफ मास हला, लेट सपोज एटा हला सेंटर ऑफ मास. हमें जानचंती ओरिजिन लु सेंटर ऑफ मास को हमें कोन डिनोट करचंती आरसी वेक्टर. ओके, एंड देन गोटे पार्टिकल नबा, आयत पार्टिकल. ओके, तारो ओरिजिन लु कोऑर्डिनेट केते आर आई वेक्टर. ओके, अच्छा, देन सेंटर ऑफ मास रु आयत पार्टिकल को डिस्टेंस ला केते आर आई डैश प्राइम फ्रेम रे हम ताकू नउछती. ओके, तो ताले एटा कोन हबो ए डायरेक्शन ले पी आई मोमेंटम. ए डायरेक्शन ले कोन हिजबो मोमेंटम पार्टिकल. लेट्स सपोज ए डायरेक्शन ले लिनियर मोमेंटम. ओके, ओके, so then the angular momentum of the ith particle relative to O, relative to O. Okay, each relative to O ith particle angular momentum को हमें जानचंती. ओके, एल द्वारा डिनोट करचंती हमें. तो ith पार्टिकल पे ओनली li लिखली. सो r क्रॉस p हमें जानचंती. सो ri क्रॉस pi. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू o रे कैलकुलेट करचंती. सिपे विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोन नबा o रु पोजीशन ri. ओके, तो ये हला इक्वेशन 1. ओके, where pi vector is the linear momentum of the ith particle full stop. Then the total angular momentum of the system about origin O is. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम रा कैलकुलेशन करबा. सो सिस्टम रे जेतरा पार्टिकल तारा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू समेशन ओवर आई. li को कोन लिखतिले ri क्रॉस pi. ओके, सिंपल. ओके, इक्वेशन 2 दे दबा. देखो नेक्स्ट, देन ओके, तो हमें बेसिकली याको डेरिवेटिव करियो. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो सेति टॉर्क आसीबो. सो dl upon dt is equal to d by dt of summation over I ri cross pi. ओके, ओके, तो देखो डेरिवेटिव हमें जेतु क्रॉस प्रोडक्ट अछि. सो डेरिवेटिव गोटे चेन रूल पड़िबो. तो समेशन ओवर I tri वेक्टर upon dt cross pi. ओके, प्लस समेशन ओवर I ri cross dpi upon dt. ओके,
तो समेशन ओवर आई dri upon dt को हमें लिख दबा ri डॉट क्रॉस pi के प्लस समेशन ओवर आई ri वेक्टर क्रॉस ओके तो आपको हमें कर दबा pi डॉट ओके तो ये दे दबा इक्वेशन 3 ओके ओके तो बट नाउ समेशन ओवर आई ए टर्मटा को हमें देखिबा ri डॉट क्रॉस pi is equal to summation over I ri dot cross देखो pi जगह में लिखिबा मोमेंटम होला mi r mi vi बा vi को हमें ri डॉट बोल लिख परिबा ओके is equal to summation over I mi ri dot cross ri dot जोटा कि is equal to 0 because same vector तांको भीतर एंगल 0 सो क्रॉस प्रोडक्ट अछि माने कोन sin 0 0 ओके एंड এটা তো হইলা 0 ওকে এই টার্মটা কোন হইলা 0 হইলা আমি pi ডট রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম আমি জানি নেট ফোর্স তো pi ডট ইজ ইকুয়াল টু fi total force okay so net force on the ith particle net force on the ith particle okay simple okay so net force टा कोन कोन हे परिबो ना एक्सटर्नल फोर्स भी हे परिबो आ गोटे इंटरैक्शन जो हमारा इंटरनल फोर्स समेशन k is equal to 1 to n I not equal to k f I k okay so vector okay so that is internal force okay so from equation 1 from equation 3 okay from equation 3 okay from equation 3 dl upon dt देखो लेफ्ट हैंड साइड रे टॉर्क रो एंगुलर मोमेंटम रो डेरिवेटिव अछि राइट हैंड साइड रे फर्स्ट टर्म ता 0 हो जाई छी सेकंड टर्म को हमें जिबा समेशन ओवर आई ए टर्म ता को लिखु छी ए टर्म ता को लिखु छी समेशन ओवर आई ri क्रॉस pi डॉट जगह रे कोन पुट करबा pi जगह रे fi f रो वैल्यू कते समेशन इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स तो fi एक्सटर्नल प्लस समेशन ओवर k is equal to 1 to n I not equal to k f I k vector okay okay so then हमें कौन करिबा ना क्रॉस प्रोडक्ट दुटा करे एडिशन करिबा so ri vector cross fi external okay fi external plus summation over k when there be n okay I not equal to k f ri cross fi k okay okay बर्तमान ए टर्म टा को देखिबा इंटरैक्शन टर्म ए टर्म टा को हम फोकस करिया ओके सो नाउ डबल समेशन अछि समेशन ओवर i आउ k n ओके ri क्रॉस f ऑफ i k वेक्टर आपको हम स्टडी करिबा तो मु लिखिबी हाफ डबल समेशन अछि माने कहितली हाफ एटा अलग अलग टर्म हे जिवो बिकॉज़ रिपीटेशन टर्म भीतर अछि 1 2 2 1 ओके तो हाफ समेशन i k r I क्रॉस f I k वेक्टर प्लस समेशन ओवर I k r k ओके क्रॉस f k I ओके तो बेसिकली मु कोन करली ना i जगह रे k पुट कर देली k जगह रे i पुट कर देली ओके इंटरचेंज कर देली जेमति f1 टू f21 ओके सो इंटरचेंज करके हाफ टर्म में आसली ओके दुटा को ऐड करके हाफ टर्म में आसली ओके so is equal to half whole into summation over I k r I vector cross f of I k okay ये रहला plus summation over I k r k vector cross देखो f k I को लिख परिबी minus f I k ओके कोन पई ना न्यूटन स्थान लॉ इक्वल एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मैग्नीट्यूड समान बट डायरेक्शन अपोजिट सेट में एफ के ऊपर आई जहां फोर्स पकोथबो आई ऊपर के तार अपोजिट से सेम मैग्नीट्यूड रो अपोजिट डायरेक्शन ले पकोथबो ओके सो हाफ समेशन ओवर आई के देखो एठी हम कोन लेली एफ आई के एठी एफ आई के कॉमन अछि
सो एफ आई के बाहर को नहीं आसली ओके सो आर आई माइनस आर के क्रॉस एफ आई के ओके तो हाफ आई के एफ आर आई का आर आई के क्रॉस एफ आई के ओके तो हम जदी मार्क करबा बोथ दुटांक सेम डायरेक्शन केमती देखो ओके सो एक्चुअली कोन हेगला समेशन ओवर आई के एफ आई के इट इज इक्वल टू एत के हमें पाई ओके तो इट इज इक्वल टू 0 केमती होबा देखो here आर आई के आर आई माइनस आर के नहीं is a vector along the line joining to ith particle to I and k okay kth particle I रू k को जो लाइन टा जॉइन करती हो सही लाइन ले आर आई के वेक्टर ओके एफ आई के वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ के आई वेक्टर ओके is the internal force between two particles okay two particles I and k okay so which acts along the line joining them okay so basically हम जदि कहिबा आर आई के and f I k are along the same line देखो केम देला सेम लाइन लेट्स सपोज एटा होची आर आई ओके ith पार्टिकल ओके सो एटा होची jth पार्टिकल ओके सो एठू डिस्टेंस लागेते ओरिजिन एटा o ओके एटा हला आर आई एटा हला आर जे ओके तो आर आई माइनस आर जे टा कोडा हो देखो एटा आर आई ओके सो एटा आर जे ओके सो ताले आर जे एटी हम के नहीं चंदी ओके के पार्टिकल सो आर के माइनस देखो आर के एटा हेज कोन हिजबो ए वेक्टरटा कोन हिजबो आर के माइनस आर आई ओके सो बेसिकली आर के माइनस आर आई टा को हम लिखचंती आर के आई ओके अच्छा ए डायरेक्शन ले ओके सेमते दीटा पार्टिकल रो जो इंटरेक्शन फोर्स टा ए लाइन दे के जीवो आदर ए पडू जाय पारे नले पडू जाय पारे ओके सो आई ऊपर एटाला आई पार्टिकल एटाला के पार्टिकल सो आई ऊपर के फोर्स पकेबो ए लाइन ले सो आइदर थीटा इज इक्वल टू कोन हबो जेतले हमें कोन कैलकुलेशन करबा आर क्रॉस आर आई के क्रॉस एफ आई के ओके सो एटा और एटा माने गोटे लाइन ले आइदर थीटा इज इक्वल टू 0 नले थीटा इज इक्वल टू 180 तो क्रॉस प्रोडक्ट माने sin आसीबो sin 0 180 0 सेति पई कोन हिजबो ए टर्म टा वैनिश हिजबो ए बुझियला ए टर्म टा वैनिश हिजबो ए टर्म इज इक्वल टू 0 तो जदि ए टर्म वैनिश रही होला ताले हम लिख परिबा समेशन ओवर आई के आर आई के क्रॉस एफ आई के इज इक्वल टू 0 ओके आई नॉट इक्वल टू के सेम पार्टिकल साथ इंटरेक्शन होबनी नॉट इक्वल टू के ओके so that is the total torque of all the interaction force by all the internal force भी हमें कहि परिबा all the internal forces okay is 0 okay तो एबे हम कोन करबा ना जो dl इक्वेशन 3 को हम देखियो मार्क करबा dl upon dt is equal to कोन थिला समेशन ओवर फर्स्ट टर्म थिला i k r i ओके क्रॉस f i एक्सटर्नल ओके एक्सटर्नल
ओके बाकी सेकंड टर्म रे तो इंटरनल फोर्सेस में टॉर्क केते आसिला 0 आसिला ओके तो आकु हम लिख परिबा देखो r क्रॉस f को हम टॉर्क लिखिबा समेशन ओवर i ओके k को हम जदी कोन करियो विथ रिस्पेक्ट टू k हम कोन करिबा समेशन करिबा ओके तो टाउ i एक्सटर्नल फोर्स माने एक्सटर्नल टॉर्क ओके तो इटा हम जानले कि टाउ i टा कोन हम कहबा एक्सटर्नल टॉर्क बोल ओके सो हियर टाउ I ith particle pen torque external torque is equal to r cross f I external ith particle ऊपर external केते torque पड़छ is the torque of the external force okay torque of the external force on the ith particle okay about o torque सब बोले गोटे about रे बाहर करा जाए about o ओके तो ये हम लिख परिबा ताले dl upon dt is equal to tau external ओके summation over I tau I t ओके तो it actually net tau external tau ओके तो बेसिकली rate of change of angular momentum is equal to external torque तो हम लिख परिबा the time rate of change of total angular momentum of a system of particles about a given origin is equal to the net torque of all the external force external forces acting on the system okay about same origin सिंपल जहां पे हमें लिखले ताको वार्डिंग रे लिख देले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system of particle about a given origin is equal to the net torque of all the external forces acting on the system about same origin okay अच्छा if जदी external torque okay कोन से पारे external torque कोन हेला 0 हे गेला okay ताले कोन हबो ना dl upon dt is equal to 0 हे जिवो ताले angular momentum is equal to constant हे okay so that is the conservation law okay angular momentum is equal to constant okay so हम लिख परिबा if the net external torque on a system about a fixed point a fixed point is 0 यदि 0 hela then the total angular momentum about that origin remains same with time सहित सेटा समान okay that is the conservation of angular momentum this conservation of angular momentum okay तो प्लस 2 तुम सिंपली पढुतला एठी तुम कोन करबो ना पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल ने के पढिबो सो एटा बेसिक जिंस तो जस्ट हमें गोटे प्रॉब्लम करबा जस्ट हमको बुझिया पे कंजर्वेशन लॉ केमती अप्लाई करा होची बिकॉज़ बहुत यूजफुल देखो तीनटा कंजर्वेशन लॉ ऊपर मु तीनटा क्लास नेली ओके स्टार्टिंग रे जस्ट मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास से कहतिली ओके
So it is important actually. Okay, so ये related बहुत question solve करी परिबा, entrance related question, problem related actual problem में solve करी परिबा using conservation of energy and conservation of angular momentum and conservation of linear momentum. Okay, so ଗୋଟେ linear momentum रो question करिबा. So question write down, question लेखा. So a 4 kg body moving at 10 I cap plus 2 j cap centimeter per second explodes into two fragments into two fragments of masses 1 kg and 3 kg respectively. Okay, so basically से कहूची 4 kg रो गोटे बॉडी अछि जोटा कि एतिकी वेलोसिटी रे जाउथला. ओके, से एक्सप्लोड अचानक से कोन हला एक्सप्लोड कला इंटरनल किछि तारो इंटरनल रिएक्शन जोगु, एक्सटर्नल किछि पडिनी फोर्स. तो इंटरनल किछि रिएक्शन जोगु से कोन कला एक्सप्लोड कला टू फ्रैगमेंट्स, गोटे हला 1 kg गोटे हला 3 kg. ओके, देन से कहछि 1 kg mass, the 1 kg mass flies with velocity 20 I cap plus 50 j cap, 20 I cap plus 50 j cap. Okay, centimeter per second, full stop. Okay, so find area first point कहछि the velocity of the T kg mass. Okay, then B कहछि the velocity of the center of mass. C कहछि the velocity of the two masses relative to center of mass. okay, तीनटा जिनस हमको बाहर करिया. देखा आउथर क्वेश्चन कोन देखछि, देखा क्वेश्चन कहछि गोटे 4 kg रो ब्लॉक अछि, 4 kg रो गोटे बॉडी अछि. ओके, जे कि केते वेलोसिटी रे जाउछि ना 10 I cap plus 2 j cap एतिकी वेलोसिटी रे से जाउछि. अचानक से कोन कला दीटा पार्ट रे एक्सप्लोड कला, गोटे हला 1 kg गोटे 3 kg. 1 kg केते वेलोसिटी रे गला ना 20 I cap plus 50 j cap सेंटीमीटर पर सेकंड. ये भी सब सीजीएस रे देछि सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके, से कहछि ए जो v2 रो वेलोसिटी केते हो. ओके, v2 ये हला v1 ये हला v, लेट्स सपोज v. ओके, तो v2 पचारछि केते. ओके, सिंपल देखो आउ पर किछि एक्सटर्नल फोर्स पडुनी, जो एक्सप्लोड हला इंटरनल रिएक्शन बाय इंटरनल किछि प्रॉब्लम जोगु ये कोन हला एक्सप्लोड कला. एक्सटर्नल किछि फोर्स पडिनी. यदि हम जानछंती dp divided by dt is equal to f external. Okay, f external. So external force यदि 0 ताले momentum कोन हबो कंजर्वेशन हबो. तो इनिशियल मोमेंटम pi is equal to p final, p initial is equal to p final. अच्छा, इनिशियल मोमेंटम केते थिला, मास एतिकी थिला, वेलोसिटी एतिकी थिला. ओके, सो इनिशियल मोमेंटम केते ना मास, इनिशियल मास इनटू v इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हला मास m1 into v1. दीटा फ्रैगमेंट्स रे जेतु जाईची ये हला मास m1 के ये m1, ये हला कोन मास m2, m1 v1 मोमेंटम. ओके, वेक्टर क्वांटिटी में दबा प्लस m2 v2 हला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, तो गोटे पार्टिकल थिला बोली गोटे मोमेंटम आसिला, दीटा पार्टिकल अछि बोली दीटा मोमेंटम आस. ओके, एडा हला इनिशियल, एडा हला फाइनल. क्लियर. ओके, तो फर्स्ट देछि इनिशियल ले 4 kg मास थिला, 4 into वेलोसिटी केते देछि ना 10 I cap plus 2 j cap is equal to, okay, is equal to m1 1 kg mass रो वेलोसिटी केते देछि ना 20 I cap
plus 50 j cap, ओके, प्लस m2 v2, हमको v2 कैलकुलेट करियार अछि, ओके, तो मल्टीप्लाई कर दबा, सो 40 i cap plus 8 j cap is equal to 20 i cap plus 50 j cap, m2 जगह रे केते वैल्यू पुट करबा ना 3 kg देछि, सो 3 v2, ओके, तो ये पड़ेला 40 i cap minus 20 i cap, ओके, plus 8 j cap minus 50 j cap is equal to 3 v2, ताले v2 is equal to, ओके, सो ये लगे दे 40 टू 20 को लगे देला 20 i cap minus 42 j cap divided by 3, ओके, तो एति पळे आसला v2, ओके, अच्छा v2 एति पळे आसला, ओके, ओके, तो जदि v2 एति पळे आसला ताले हमें कोन करबा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि, नेक्स्ट कहछि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ओके, सो देखो velocity of the center of mass, next question देछि the velocity of the center of mass, okay, okay, so देखो सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी हमें केमति कैलकुलेशन करबा, देखो इनिशियली फर्स्ट पार्टिकल टा जो वेलोसिटी रे मूव करथला m पार्टिकल टा बा m बॉडी, ओके, जो वेलोसिटी रे मूव करथला तार सेंटर ऑफ मास भी सेही वेलोसिटी रे मूव करबो, होल बॉडी मूव करछ माने सेही वेलोसिटी रे सेंटर ऑफ मास ए बॉडी रो गोटे पॉइंट रहिथिबो, से भी सेती वेलोसिटी रे मूव करबो, ओके, अच्छा आ ऊपर किछि एक्सटर्नल फोर्स पडुनी, तो एक्सेलरेशन कोन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, ओके नहीं, फोर्स पडुनी माने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, ताले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज होबनी, इनिशियली जति वेलोसिटी रे सेंटर ऑफ मास जाउतला फाइनली भी सेति वेलोसिटी रे जीवो, ओके नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट हम लिखिबा v, v रो वैल्यू केते थिला ना 10 i cap plus 2 j cap, ओके, एति की थिला सेंटर ऑफ मास, ओके, ये हला सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन ला आंसर, थर्ड क्वेश्चन ला आंसर कहूची velocity of first particle with respect to center of mass and velocity of second particle with respect to center of mass, so v1 से को हम लिखिबा v1 वेक्टर माइनस vc वेक्टर, ओके, सो v1 वेक्टर हम ऑलरेडी कैलकुलेशन करछंती, जोटा कि देछि से 1 kg मास जाउछि केतरे ना 20 i cap plus 50 j cap, ओके, वेलोसिटी माइनस vc सेंटर ऑफ मास रो वेलोसिटी अभी जस्ट कैलकुलेशन करले 10 i cap plus 2 j cap, ओके, तो आंसर आसी जिवो केते 10 i cap plus 48 j cap, ओके, तो एति पळे आसला कार वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 with respect to center of mass, सेम डेटा हला v2 minus vc, सो v2 ऑलरेडी हमें कैलकुलेशन करी रखछंती, तो v2 हला एति की, सो v2 हला 20/3 i cap, okay, then 42 upon 3 j cap minus vc है लगे थे ना 10 i cap minus 2 j cap, okay, सो आपको सॉल्व करले minus 10/3 i cap, okay, सो ये माइनस माइनस प्लस है गला, माइनस माइनस प्लस है गला, ओके, तो माइनस माइनस कॉमन नहीं गले प्लस एडिशन हबो, सो दिले 6 सो दिले 8, ओके, सो 48 डिवाइडेड बाय 3 j cap, ओके, so velocity of 2 with respect to c, ओके, तो बेसिकली एटा होची रिलेटिव वेलोसिटी हमें कहबा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हम एमति लिखंती va with respect to b is equal to va minus vb, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी कांसेप्ट आसला, तो बेसिकली ए टाइप रो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर परिबा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन थ्योरम, ओके, सो नेक्स्ट क्लास रे जहां भी हमें पढिले, नेक्स्ट क्लास रे हमें किछि रोटेशनल डायनामिक्स विषय रे पढिबा, ओके, रोटेशन केमति होची, एंगुलर वेलोसिटी केमति आछी, एक्सेलरेशन केमति आछी, टॉर्क केमति आछी, ओके, गोटे फिक्स्ड एक्सिस रे रोटेशन हेले कोन हबो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट रो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करबा, सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एटा एक्चुअली, जो माने भी चाहू पीजी करिया पई भलो जगह रो, सो ए बेसिक कांसेप्ट तुमके ओनली सेमेस्टर पई मार्क ले होबनी, सो बहुत बेसिक रू पढ़ौची, पूरा बेसिक क्लियर होबा दरकार एंट्रेंस एग्जाम पई, ओके, सो जोटा तमे मिस करबो एबे तमे किछि भी कांसेप्ट मिस करबोनी, फिजिक्स को एन्जॉय करबो एक्चुअली,
फिजिक्स नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट मुझे तुमको फिजिक्स को एंजॉय न करके पढ़ेली तो किसी वैल्यू नहीं तुमको पढ़ेबा ओके तुम कमेंट भी करि परिबो ओके जहाँ को पसंद होनी तो तुम कमेंट कले मुझे इम्प्रूव करी ओके तुम कमेंट कर पुट योर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू तुम कौन कि सर आप एमती पढ़ातु कि सेमती पढ़ातु ओके मुझे फिल करुच्ची कि नाई यही कॉन्सेप्ट तुमको दरकार ओके जदियो तुम टिके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मु पढ़ाऊँगी सिलेबस बाहर से तुमको ओवरऑल फिजिक्स को गोटे कौन फिल करने तुमको पढ़ाऊँगी ओके ओनली मोर मार्क नुहे मोर एम नुहे कि तुम ओनली सेमिस्टर मार्क रख मोर एम या हम कि तुम हायर स्टडी कर भल इंस्टीट्यूट रे विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ओके ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हम स्टार्ट करबा रिजिड बॉडी डायनामिक्स ओके सो थैंक यू।